Classification of industries. I hope that this topic is very much clear in your mind as far as your class 8 knowledge. So let's check what we have discussed in previous classes. On the basis of raw materials, we all know that we have discussed about more than that agro-based industries and mineral-based industries. These are the basic raw material for any industries. Agro-based में cotton, woolen, jute, silk, etc. Whatever grow in agricultural field, if they are used as a raw material for manufacturing something, is known as agro-based product. Then mineral-based industries. In minerals are various types. They are utilized for other activities, for utilized for manufacturing thing. For example, raw metals of copper, iron, etc. On the basis of कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हमने तीन, इसके अलावा हमने इसमें और पढ़े थे दैट फॉरेस्ट बेस, मराइन बेस, आल्सो वी रीड अबाउट इन क्लास 8th. नाउ कम बैक टू द पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. वन portion is missing, that is cottage industries. Cottage industries, we have gone through it about as well. Small scale, large scale. Small scale capital investment is less and workers are less than 100, whereas in large scale crores and crores of rupees are required. Basically large scale industries are established by the government or a joint venture production. So that is the large scale industries where crores and crores of rupees are required and thousands of workers involved in the production activities. According to the main role, basic or key industries. Basic or key industries are the base of industries. For example, iron and steel industries. Iron and steel is called the basic industry because they provide a raw material for other industries as well. Copper smelting, aluminum smelting are the example of other basic industries. Then you have another important industry, consumer industries, which provide product for direct use of consumer. For example, toothpaste डायरेक्ट फैक्ट्री से यूज़ होकर हमारे पास आता है, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ऑनरशिप. ऑनरशिप में आपका पब्लिक सेक्टर आता है. पब्लिक सेक्टर नाम से पता चलता है, इट इज़ रन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे और एनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज विच इज़ रन बाय द गवर्नमेंट, लाइक BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, विच इज़ रन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोई प्राइवेट सेक्टर यूनिट उसको चला रहा है, जैसे ग्रेसिम फैक्ट्री नागदा की, फॉर एग्जांपल ऑफ दिस. देन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री विच इज रन एंड ऑपरेटेड बाय द टू और मोर ग्रुप ऑफ पीपल, आइदर कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. इफ दे एस्टेब्लिश देयर इंडस्ट्रीज इज नोन एज जॉइंट सेक्टर. और प्राइवेट सेक्टर में दो बड़े बड़े बिजनेस टाइकोन मिला के इसको चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक आर देयर मोर इन दैट पार्ट. कोऑपरेटिव सेक्टर, a very interesting sector, cooperative sector, under which producer and supplier raw material and workers together involved in the production activities and profit are shared by the people. That is called consumer industry or cooperative industry. For example, Amul, the taste of India. You heard about this product. It's an example of cooperative sector unit. Then based on bulk and weight of raw material and manufacture or finished goods. Based on bulk and weight of raw material and finished goods, इसमें दो तरह के आते हैं, heavy and light. Heavy industries, iron and steel is example of heavy industries. Then light industries, it's an example of electrical goods. ऐसे हल्के मटेरियल जो कि डेली यूज में काम आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स है etc. आर द एग्जाम्पल ऑफ दोज इंडस्ट्रीज. So that's it for the topic.